तो गाइज आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ जोएल से। जोएल जो है वो साउथ इंडिया से है एंड जोएल हमारे बिटसैट बूस्टर क्रैश कोर्स का पार्ट है। जोएल के बिटसैट के फर्स्ट पेपर में ही बहुत बढ़िया नंबर थे। ही स्कोर्ड 314 मार्क्स इन बिटसैट पेपर, फर्स्ट पेपर। एंड इतने बढ़िया नंबर फर्स्ट पेपर में आए कि जोएल ने बिटसैट का जो सेकंड पेपर था वो दिया ही। एंड जोएल की अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट आई थिंक जोएल आपके 98 परसेंटाइल थे, व्हिच वाज वेरी गुड परसेंटाइल। सिमिलरली जेई एडवांस में जोएल गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो जोएल के पास ऑप्शन था कि ही कैन गो टू आईआईटी धनबाद, आईआईटी बीएचयू, बट आईआईटीज को भी छोड़कर टुडे जोएल इज गोइंग टू बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस, राइट? तो Yes, काफी ma'am. काफी सारी मेहनत जो है आई थिंक यहाँ पर दिख रही है कि जोएल ने करी है। तो जोएल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। एंड कैसा लग रहा है, मतलब हाउ इज योर फीलिंग? I'm happy. आई एम हैप्पी। Like, तो फाइनली मतलब आपने डिसाइड कर लिया ना कि आईआईटीज जाना है या बिट्स जाना है। सो व्हाट इज योर फाइनल डिसीजन, कहाँ जा रहे हो? uh, bits because the I'm getting my favorite course as well. CS. सो जोएल को उसका फेवरेट कोर्स, फेवरेट कॉलेज मिल रहा है। सो टुडे नाउ जोएल इज गेटिंग बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस। मतलब मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ये क्लेम करते हैं कि वी आर द बेस्ट कॉलेजेस, बट बिट्स एक ऐसा कॉलेज है विच इज सीरियसली एज गुड एज आईआईटीज, मतलब इफ नॉट मोर, इट इज नॉट लेस देन आईआईटी ऑल्सो। चाहे मैं बिट्स के कल्चर के बारे में बात करूं, बिट्स की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं, बिट्स की एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में बात करूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मुझे बिट्स की नो अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में बात करनी है, सो एवरीवेयर दिस कॉलेज स्टैंड्स आउट। तो जैसी मैं बात कर रही थी एंड वी केम टू दिस टॉपिक कि नो अटेंडेंस पॉलिसी, सबसे ज्यादा स्माइल आ गई। मतलब अभी तक एवरीथिंग वाज ओके बट देयर वाज अ बिग स्माइल ऑन जोएल्स फेस जैसे ही मैंने बोला कि देयर इज नो अटेंडेंस पॉलिसी। आपको पता था, इसीलिए मतलब बिट्स पे इतनी मेहनत करी है, या नथिंग लाइक दैट? There's nothing much like that, but it's a plus point for sure. यस मैम, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें कंसीडर डेफिनेटली करना है। अरे ग्रेट। तो जॉयल, आपका मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? मतलब आप जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड देन बिटसैट हुआ, तो आपने दोनों चीजें कैसे मैनेज करी? I for me my means I got 98 percentile, but I couldn't get a decent course like in the top NITs. So I thought like now it's like bits because it's at par with the other colleges, the top colleges of our nation. And for me, as far as the journey for BITS is concerned, I consider it as a sequel to the JE journey. It was like because the studies part it was same. It was only the solving like for the questions. It's like the variety is different because for JE it was like the competition is more, so the questions are little more tough. But for BITS, that's like more of like speed and accuracy. So I had to manage that part. तो मतलब शुरू से ही दोनों चीजों की पैरेलल तैयारी करी थी, या बाद में क्लिक किया कि नहीं अब मुझे बिट्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना है? Like once, like towards when the J means results came, like I was not getting a like CS or EC in a good NIT, so I started preparing for bits. तो जोएल, वन मोर क्वेश्चन आई हैव फॉर यू। जब आपका जेई मेंस का रिजल्ट आया, सिंस यू टोल्ड मी आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था इन बोथ फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, तो उसके बाद आपने एडवांस के लिए प्रिपेयर किया या मतलब आपका फोकस था कि मुझे बिट्स का ही करना Uh, like I wanted to write advance for sure, but I was a little adamant on the course because so I thought about BITSAT because BITSAT the competition is little less. है? यस, So ये I बात, prepare more for BITSAT. यस, दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट। मतलब जहां जेई मेन का पेपर जो है वो 12 साढ़े 12 लाख बच्चे देते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट जेई मेंस, बट व्हेन इट कम्स टू बिटसैट इट्स ओनली 2.5 टू 3 लाख स्टूडेंट्स जो बिटसैट का पेपर देते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो बिटसैट का पेपर देते नहीं है, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जाम,
मतलब जहाँ 12.5 लाख बच्चे जेई मेंस का पेपर देते हैं, वहां बिटसैट का पेपर केवल 2.5 से 3 लाख बच्चे देते हैं. सो वन ऑफ द रीजन इज कि पीपल आर नॉट अवेयर. द अदर रीजन इज पीपल कंसीडर कि ये तो प्राइवेट कॉलेज है, बट स्टिल आई कैन से दिस थिंग कि अगर आपको बिटसैट में, जैसे आपको बिट्स हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, इट इज एज गुड एज आपको किसी ओल्ड आईआईटी में एक कोर ब्रांच मिल रही है. इवन मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, दैट टू इन हैदराबाद, तो लोकेशन वाइज इट इज परफेक्ट, ब्रांच वाइज इट इज परफेक्ट. अगर मैं बिट्स के एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करूं, आई थिंक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स इज बिट्स का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है. सिमिलरली अगर मैं वहां के कल्चर के बारे में देखूं, आपने कभी यूट्यूब पे भी बिट्स का, मतलब किसी भी कैंपस का आपने कोई फेस्ट देखा है? किसी फेस्ट की हाँ, वीडियो देखी है? yes, मतलब yes. बिट्स के जो फेस्ट होते हैं ना, दीज आर लिटरली एज गुड एज कि जब आप आईआईटी के फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो. सो एवरीथिंग इज ग्रेट. मतलब सब कॉलेजेस बोलते हैं कि हम टॉप के कॉलेजेस हैं, बट आई थिंक बिट्स ने टाइम एंड अगेन एंड इन एवरी फील्ड इट हैज प्रूव्ड कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. बट अब आप मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि हाउ डिड यू फाइंड दैट, मतलब वो डिफरेंस क्या था लेवल ऑफ क्वेश्चंस में, मतलब बिट्स के पेपर में किस तरीके के जो सवाल आते हैं वर्सेस जेई मेन के पेपर के जो सवाल होते हैं, क्या उनके लेवल में आपको बहुत डिफरेंस फील होता था? Yes. JEE means was always like on the tougher side compared to bits. But फॉर if ऑल you द check थ्री the सब्जेक्ट्स? like if you consider chemistry, like you might find like direct from inorganic in both. But other than that, like JEE means is like on the tougher side. ओके, तो जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो आपको ऐसा लगा कि जब मैं जेई मेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मुझे बिटसैट के लिए भी हेल्पफुल थे, या मतलब जेई मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड बिटसैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज टोटली डिफरेंट, मतलब व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू? Uh, I think we can practice, but like for the time management part, like I think you should be doing the bits, the mock tests. ओके, मतलब बिट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बिट स्पेसिफिक थ्योरी, बिट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट वो जरूरी है अगर यू वांट अ गुड स्कोर Uh, इन दिस. y- yes. अच्छा जॉय, एक और बच्चों का कंसर्न होता है, एंड इस कंसर्न को आई थिंक हम उतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप बच्चों को बता पाओगे, सिंस यू हैव गिवन द पेपर. तो बिट्स में ये सिस्टम होता है ना कि यू डू दीज मेनी क्वेश्चंस, उसके बाद यू गेट दैट बोनस वाला पार्ट, तो वो एक बार मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से इट वर्क्स. Yeah, so in the first section for all the subjects there are 130 questions. So once you solve them, you can attempt the bonus questions, but you have to solve each and every question in the first section. So in case you are not able to solve a few, like you have to take that risk, like either guess them, and you have to be sure that you have to like make up for it in the next section. So ओके. like if you're and the bonus questions are like little more a bit more tougher than the first section questions. ओके, तो आपने मतलब कितने अटेम्प्ट किए थे जब आपका पेपर चल रहा था, एंड सिंस यू गेव बिटसैट का फर्स्ट पेपर, वहीं पे ही बहुत अच्छा स्कोर आ गया, इसीलिए बिटसैट सेकंड नहीं दिया ना, एम आई राइट? Uh, it was like there was some 1 month gap, so and एंड यू it's वर like लाइक too difficult. 314 इज अ गुड स्कोर, दोबारा नहीं मेहनत करनी है. Yeah. आई वाज सो सैचुरेटेड टू स्टडी 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 कि आई एम लाइक नाउ बहुत बढ़िया, 314 आई एम डन. तो हाँ, तो मतलब आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे पेपर के दिन मैथ्स में? Uh, Maths I had attempted 36 questions. Then then chemistry I left one question, and in physics I left two questions. Then in English, I left like while solving, I had left a question. Then I had like 25 minutes left. So like I went with my intuition or guesses. I guessed like 7, 8 and went to the bonus questions, and I ओके. got plus 12 there. ओह नाइस नाइस, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया था उस टाइम. तो जॉय मुझे ये बताओ, जिस तरीके से आपने बिटसैट का बूस्टर क्रैश कोर्स फॉलो किया था, राइट, उसमें व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू यू? मतलब जो चीज आपको ऐसे लगी कि यार ये मेरा बिट्स का पेपर है, दिस इज द स्कोर व्हिच आई एम गेटिंग, एंड दिस स्कोर इज समहाउ समहाउ फ्रॉम हियर कि चलो मैंने ये चीज करी, एंड अच्छा मुझे दो तीन अच्छी बात बता दो अबाउट द क्रैश कोर्स. First is that like when you solve the actual paper, like when you see the questions, like you get a feeling that I've done something similar before. And like
it's not only helps in getting your marks, but also confidence during the exam, because it's like compared to other exams here, you can't go selective on questions. You have to attempt a lot of questions. So you have to have that confidence within you. And so, yeah, so the mock test helped me in that. Yeah, then the videos also help because for BitSat, you have to go on a different way compared to other competitive. So yeah, and that also helped. And the DPPs, like they give you a rough idea as to what level the questions come after doing each chapter. Yeah, ओके नाइस। सो मतलब आपको वर्थ इट लगा था कोर्स? मतलब जितने का yeah, कोर्स था यू फाउंड कि इट वाज़ वर्थ इट। yeah. अरे ग्रेट ग्रेट। तो जोएल व्हाट विल बी योर एडवाइस टू नाउ योर फेलो जूनियर्स? मतलब अब तो आप एक सीनियर पोजीशन पे आ चुके हो, यू आर अ सीनियर, है ना? अब आपके साथ के जो छोटे बच्चे हैं, मतलब नाउ दोज़ हू आर ट्राइंग टू गिव जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसैट, तो आप सारे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम? Like for BitSat specifically, it's like the competition is less, so you can have more hopes. Because for JEE, there are like people who might study for like 2 to 7 years. But for BitSat, it can be like cracked in a few months. So even if you are not able to perform well in the other exams, you can still keep hope and prepare for BITS. अरे नाइस। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि डोंट जस्ट स्टिक टू वन एग्जाम, मतलब डेफिनेटली जेईई मेंस, जेईई एडवांस आपको करना ही करना है, बट इट्स नॉट लाइक जस्ट दीज एग्जाम्स, मतलब यू नीड टू गो फॉर द अदर आल्सो, बिकॉज़ जो बिट्स का जो ऑप्शन है दैट इज एज गुड एज आईआईटी। तो मतलब वो डेफिनेटली Yeah, देना है। एंड साथ ही साथ अभी एक वर्ड आपने बोला कि इट कैन बी डन इन अ फ्यू मंथ्स। तो एंड द yeah, स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेंस इज डिफरेंट, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब इवन अगर मैं जोएल के केस में बात करूं, मेंस में ही वाज हैविंग 98 परसेंटाइल, तो मेन से yeah, आई थिंक उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। एंड huh, एडवांस से ही वाज गेटिंग वेरी गुड कॉलेज, एडवांस से आईआईटी धनबाद यू वर गेटिंग राइट, बट देन यू चोज फॉर yeah, कि मुझे बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस ही जाना है। डेफिनेटली आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग सच अ पॉजिटिव वाइब कि मैम, मतलब जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बट आई वाज ऑलवेज लाइक आई कैन डू बेटर, आई कैन डू वन मोर थिंग। सो ये फील मुझे पता नहीं आपसे बात कर आई है। एंड आई थिंक इट इज सच अ गुड थिंग कि इतना पॉजिटिव आप हो। अभी भी ना बीच-बीच में कोई अच्छी बात होती है एंड देन यू स्माइल लाइक एनीथिंग। आई एम लाइक अरे नाइस।